Very nice. Next part of current electricity, we will continue with system of resistor and effective resistor. All of you know the system of resistor, two resistor systems. Two resistor systems that we have studied up till now. One is resistance in having a given amount of resistance between its two ends in different ways. Ohm's law is applicable to all such conductive resistors. Resistors in series. Study figure, you can see that the ends of the three resistors are connected so that they follow one after the other in a single line. These resistors are said to be connected in series. In such an arrangement, the same current flows through each resistor. The value of current is I, and the potential difference between C and C is V. Resistors R1, R2, and R3 are connected in series in the circuit. Let the voltages across them be V1, V2, and V3 respectively. Then V is equal to V1 plus V2 plus V3, 1. If Rs, S for series, is the effective resistance between C and D, then according to Ohm's law, V is equal to IRS, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, and V3 is equal to IR3. Substituting all these in equation 1, we get IRS is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. RS is equal to R1 plus R2 plus R3. If N resistors are connected in series, then RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus up to Rn. If resistors are connected in series, 1. The same current flows through each resistor. 2. The effective resistance of the resistors is equal to the sum of their individual resistances. 3. The potential difference between the two extremes of the arrangement is equal to the sum of the potential differences across individual resistors. 4. The effective resistance is larger than each of the individual resistances. 5. This arrangement is used to increase the resistance in a circuit. Do you know? When resistors are connected in series, they are connected one after another. If any one of them does not function, the circuit breaks and there is no flow of electricity. If two bulbs are connected in series, they will both give less light than if they had been connected individually. If three bulbs are connected in series, their light output will decrease further. Think about it. What is the reason behind this? क्या रीजन है इसके पीछे? अब यहाँ पे 3 बल्ब, पहले एक बल्ब था ना, पहले दो थे, उसका ब्राइटनेस देखा आपने. अब 3 बल्ब लगाने के बाद ब्राइटनेस में क्या फर्क आएगा? ब्राइटनेस कम होगी या ज्यादा होगी? हाय, ब्राइटनेस क्यों कम होगा? What increases and what decreases?
resistance increases and due to which electron decreases, and that is why the brightness it has been, but the same current flows through the each bulb. That is the series we use in our Diwali and whatever during the festival or marriage ceremonies. That series are based on this principle. The number of bulbs we are connect, and what is if one bulb stop working, the whole series it get switch off. Solve examples for resistors in series. Example 1. 3 resistors having resistances of 15 ohm, 3 ohm and 4 ohm are connected in series. What is the effective resistance in the circuit? Effective resistance in the series is RS is equal to R1, R2, R3 कितने भी हम कनेक्ट कर सकते हैं? 22, right? R1 plus R2 plus R3. Given R1 is equal to 15 ohm, R2 is equal to 3 ohm, नेक्स्ट पहला तो सिंपल था, इसमें सिंपल एडिशन करनी है. अब यहाँ पे देखिए 2 रेजिस्टर्स हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम एंड 14 ओम. 2 रेजिस्टर्स है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है 18 वोल्ट. देन द कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. क्योंकि सीरीज में एक बात याद रखना है, करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम बट वी हैव टू अप्लाई द डिफरेंट पोटेंशियल. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक को अलग है. 18 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड. अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह का है. सपोज वी हैव कनेक्टेड द 2 बैटरीज ऑफ 6 वोल्ट ईच. द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज 9 वोल्ट. 18 है ना, that is 9 volt. This one is R1 and this one is R2. अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है क्या? नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे V हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे V अलग से हमें अटैच करना पड़ेगा वोल्ट मीटर, तब जाके हमें R1 का पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा, यहाँ R2 का पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा. बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन द V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन. तो यहाँ पे R1 की वैल्यू दी है, R2 की वैल्यू दी है, और यहाँ पे कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस दिया है हमें 18 वोल्ट. हमें क्या विचार पूछा है? V1 एंड V2. यू हैव टू फाइंड आउट V1 एंड V2. द रेजिस्टेंसेस आर गिवन 16 ओहम एंड सेकंड इज 14 ओहम. R1 इज इक्वल टू 16 ओहम एंड R2 इज इक्वल टू. तो पहले क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट वी हैव टू फाइंड? बिकॉज सेम इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस. हर एक रेजिस्टेंस से करंट क्या फ्लो होता है? सेम. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है. तो गिवन क्वांटिटीज हमें मिली है R1 एंड R2, तो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा R1 प्लस R2 से. अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS मिला है, तो RS इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस and 18 volt potential difference is applied to the combined resistance, and by using I is equal to V is equal to IR. I is equal to V by R. तो यहाँ पे हमें मिलेगी I की वैल्यू. तो I is common for both. अब इस I का यूज करके हमें R1 कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है और R2 को कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है ये हमें पता चलेगा. तो V is equal to IR. V is equal to IR. सिंपली I जो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा उसे मल्टीप्लाई करना है R1 से, हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. उसे इसी करंट को मल्टीप्लाई करना है R2 से, उतना ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. और दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस की एडिशन करेगी तो कितना आएगा? 18 वोल्ट. अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ समझ लेना है.
given quantities. Let R1 and R2 and V1 and V2 is the potential difference applied. 16 वोल्ट के लिए हमने V1 लिया है और 14 ओम के लिए V2. Let the current flowing through the circuit be I and the potential differences across 16 ohm and 14 ohm be V1 and V2 respectively. V is equal to IR, V is equal to V1 plus V2, which is equal to 18 volts. I is equal to V upon R, which is equal to 18 volt upon 30 ohm. Therefore, I is equal to 0.6 ampere. V1 is equal to IR1. V1 is equal to 0.6 multiplied by 16, which is equal to 9.6 volt. V2 is equal to IR2, which is equal to 0.6 multiplied by 14, which is equal to flowing in the circuit is 0.6 ampere, and the potential differences across the resistances 16 ohm and 14 ohm are 9.6 volt and 8.4 volt respectively. आया समझ में? So potential difference in the series combination is different for different resistance and current flowing through each resistor is same. Parallel में इससे उल्टा. Do you know, the resistance of some conductors becomes nearly zero if their temperature is decreased up to a certain value close to 0 K. Such conductors are called superconductors. Some conductors do not obey Ohm's law. Such conductors are called non-ohmic conductors. तो यहाँ पे दो हमें पॉइंट्स मिले हैं. एक तो सुपर कंडक्टर. सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं बताया ऑलरेडी. व्हाट इज सुपर कंडक्टर? द कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो by decreasing its temperature is called as superconductor. We require the superconductors in supercomputers. Okay. And non-ohmic conductor. Resistors in parallel. Resistors are said to be connected in parallel when their ends are connected at both sides as shown in figure. The figure shows three resistors R1, R2 and R3 connected in parallel between points C and D. V is the potential difference between C and D. Let I1, I2 and I3 be the currents flowing through R1, R2 and R3 respectively. Then the total current flowing through the circuit is I is equal to I1 plus I2 plus I3 1. Let RP, P for parallel, be the effective resistance between C and D. According to Ohm's law, I is equal to V upon RP. Similarly, I1 is equal to V upon R1. I2 is equal to V upon R2. I3 is equal to V upon R3. Substituting these in equation 1, V upon RP is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. Therefore, 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. If n resistors are connected in parallel, 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 up to 1 upon Rn. यहाँ पे इतना जो डिराइव किया एक्सप्रेशन तो हमें
ये सिंपल एक्सप्रेशन है, इसमें याद रखने वाली बात जो है आप फार्मूला में याद रखना है. एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट हैपन्स, the potential difference applied across each resistor is same, but the current flowing through each resistor is different. And in series में क्या होता है, if we increase the number of resistor, the resistance increases. Here, if we increase the number of resistance, the effective resistance it decreases. यानी कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इतना नहीं आएगा इसमें. इसके बेस एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन क्या आएगा, विच कॉम्बिनेशन विल यू यूज टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन सर्किट. कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, पैरेलल. एंड विच कॉम्बिनेशन विल यू यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन. विच कॉम्बिनेशन हैव द करंट सेम, विच कॉम्बिनेशन हैव द, हमारे घर में जो कॉम्बिनेशन है ये कौन सा है, parallel. Therefore, each and every equipment draws the different several bulbs connected in parallel becomes non-functional because of some damage to its filament, the circuit does not break as the current flows through the other parts and the rest of the bulbs light up. पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता. अगर एखादा बल्ब या कोई भी रेजिस्टर अगर हमारा बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक सप्लाई कट हो जाएगा, तो बाकी जो रेजिस्टर है इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है. सपोज दिस बल्ब इज डिफ्यूज, द रेस्ट ऑफ द बल्ब्स दे लाइट्स. बस सीरीज में ऐसा नहीं. सीरीज में अगर एक भी बल्ब का बंद हो गया या डिफ्यूज हो गया तो सीरीज के सभी बल्ब क्या होते हैं, बंद होते हैं. When several bulbs are connected in parallel, they emit the same amount of light as when they are connected individually in the circuit, while bulbs connected in series emit less light than when connected individually. If a number of resistors are connected in parallel, 1, the inverse of the effective resistance is equal to the sum of the inverses of individual resistances. 2, the current flowing through an individual resistor is proportional to the inverse of its resistance, and the total current flowing through the circuit is the sum of the currents flowing through individual resistors. 3, the potential difference across all resistors is the same. 4, the effective resistance of resistors connected in parallel is less than the least resistance of individual resistors. 5, this arrangement is used to reduce the resistance in a circuit. Solve examples of resistors in parallel. Example 1. Resistors having resistances of 15 ohms. If you are out regarding the question, you note down that number and give me that number. Those who remember the number, नहीं आते. फिर नंबर दो. Tomorrow. Okay. 5. Tomorrow I will see the break. तो अभी जो है यहाँ पे हम क्लास खत्म कर रहे हैं और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम कल लेने वाले हैं. यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट निकालना है और इसे सॉल्व करना है.